They're both 1 and 2 above. Okay. The Constitution of India explicitly prohibit the children under age group of 14 from working in mines, factory and hazardous environment. हमें कहले चाइल्ड लेबर को बैन कराई जी. चाइल्ड लेबर कितना नंबर आर्टिकल अच्छी? 24. आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर. तो बिलो 14 वर्ष तल को जो चाइल्ड माने रहिले माइंस की फैक्ट्री की हाजारस ऑक्युपेशन रे से माने काम करि परिबे नाही. तो हमर ओटे पडिथिला आईएएस रे ओटे क्वेश्चन पडिथिला आईएलओ रे चाइल्ड लेबर डेफिनेशन कोन? केते वर्ष एज तळ को हमें कहबा चाइल्ड लेबर? 14 वर्ष ना अधिक केते एज हमर चाइल्ड लेबर? 14 years. 14 years. Only 14 years. Below 18 years. आईएलओ डेफिनेशन अनुसार 18 वर्ष रु कम पिला को तमे काम रे खटेबो नै. 18 इयर्स तळ को हमर ओडी माने इंडिया रे होची केते 14 वर्ष. 14 वर्ष तळ को तमे कोनोसी जो चाइल्ड को हमें कोन करियो फैक्ट्री लेबर एज रे काम करेबनी. एटा चाइल्ड लेबर रे आईएलओ रिपोर्ट अनुसार हमर 18 इयर्स. आईएएस रा प्रीलिम रे ओटे क्वेश्चन पडितिला. आईएल रो दीटा कोड अछि. गोटेला 138 आ 182. आईएल रो ए कोड दीटा को जो हमें कहूचे कोड 138 आ 182. एटा रिलेटेड टू व्हाट? हां कौन ना रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर. एटा आईएएस रा प्रीलिम रे पडिथिला मने रखिबो. आईएलओ कोड 130 132 138. तो एटा रिलेटेड टू हमर कोन होची चाइल्ड लेबर. ओटे चाइल्ड लेबर को हमर बैन करा जिवो. आ जे माने चाइल्ड लेबर करू छथि ताको पनिशमेंट दिया जिवो. ओके. तो एबे हमर मने रखिबो हमर इंटरनेशनल जो चाइल्ड लेबर हमर को डेट टाको हमर इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर हिसाब रे हमर सेलिब्रेट करा जाय. एनीवन नो इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर वर्ल्ड जो हमें कहूची वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. तो एटा हमर केबे सेलिब्रेट करा जाय? ठीक है, चेक करियो. 12 जून 12 तारीख. ओके. इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर डे. ठीक है, इंटरनेट रे चेक करियो. मने नाही मोर ठीक रे. मे बी जून 12. सर जून 12. जून 12. हां आसो. तो एटा होय हमर इंटरनेशनल वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे. तो 2024 रे कोन थिला? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर. एटा हमर केते कहले? आर्टिकल 24 child labor. Okay. So next question 73. How many times has national emergency been declared in India so far? आज पर्यंत केते थर इमरजेंसी हमरा लागू हेछि? ओके. केते थर? 3 टाइम. तो को केबे केबे हमर नेशनल इमरजेंसी लागू हेछि? 1962 इंडिया चाइना वार. चाइना वार. तापरे 1965 71 इंडिया पाकिस्तान वार. ओके. तापरे हमें कहूचे 1975 इंदिरा गांधी हमें पकेइथिले हमर देश रे इंटरनल डिस्टर्बेंस. ओके. सो आ ऊपर जो परीक्षा रे पडुची वेरी वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट आपरे मने रखिबा जे तिन्नी थर हमर नेशनल इमरजेंसी लागू हेछि. 1962 रे इंडिया चाइना वार. 1971 रे इंडिया पाकिस्तान वार. तापरे 1975 रे हमर इंदिरा गांधी जो हमें लगेइथिले नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस को नै की. तो ए दीटा का केस कोन हमें कहिले नेशनल इमरजेंसी लागू हेबा पई कोन हमर क्राइटेरिया में कहिले केत नंबर आर्टिकल 352 कोन क्राइटेरिया? वार हेतिबो, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन. ओके. एग्रेशन आउटे आर्म रिबेलियन. सो आर्म रिबेलियन ए तीनटा का कंडीशन परीक्षा रे ओपीएससी रे पडिथिला.
केते नंबर आर्टिकल हमर नेशनल इमरजेंसी 352 तीनटा कंडीशन वार एक्सटर्नल एग्रेशन आर्म रिबेलियन तेनु ए दीटा कहला एक्सटर्नल एग्रेशन जो हमर वार माने वार नो वार लाइक सिचुएशन जो एक्सटर्नल एग्रेशन आ जो 1975 रे जो लागिथिला इंदिरा गांधी को समय इंदिरा गांधी कहले जे गवर्नमेंट को भांगिया पई ट्राई करा जाउची इंटरनल डिस्टरबेंस हमर क्रिएट करा जाउची तो नेशनल इमरजेंसी हमर 1975 रे लगा जाइथिला तो एई धिरे जो इंटरनल डिस्टरबेंस ता जो कॉज हमर थिला सेटा को चेंज करा गला चेंज करी की आर्म रिबेलियन करा गला केबे हमर आर्म रिबेलियन करा गला एटा को अमेंडमेंट एक्ट रे इंटरनल डिस्टरबेंस ता को चेंज करी की आर्म रिबेलियन करा जाइतला आईएएस रो प्रीलिम क्वेश्चन थिला को 44 अमेंडमेंट एक्ट 44th अमेंडमेंट एक्ट केबे 1978 कहा समय रे जनता गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई जनता गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई ओके तो एई समय रे हमरो जे इंटरनल डिस्टरबेंस को चेंज करके इंटरनल आर्म रिबेलियन करा गला तले जते बेले हमरो इंदिरा गांधी माने इमरजेंसी आनी थिले सेते बेले कोन हमरो प्रेसिडेंट किए थिले फखरुद्दीन अली अहमद थिले तो तांकु से कोन कले जस्ट ओरल माने किछि रिटन अप्रूवल न नै कि तांकु खाली कहि देले आउ प्रेसिडेंट हमर नेशनल इमरजेंसी लगै देले किंतु वर्तमान नेशनल इमरजेंसी लगेवा को हेले प्रेसिडेंट को कौन दरकार ना तमरो काउंसिल जो हमर कैबिनेट रो रिटन अप्रूवल दरकार ओपीएससी प्रीलिम रो क्वेश्चन थिला नेशनल इमरजेंसी वर्तमान लगेवा को हेले हमर कौन दरकार ना कैबिनेट जो मिनिस्टर हमें कहूचे कैबिनेट मिनिस्टर रो हमर रिटन अप्रूवल दरकार तेनु तमे फोन करी सेतले हमर इंदिरा गांधी को कहि देले इंदिरा गांधी कहि देले प्रेसिडेंट को से लगे देले पर कोन प्रूफ जे से यदि कहबे जे इंदिरा गांधी कहे मु माने कहिनी तुमको तमे तम मन इच्छा लगे तेनु कोन प्रूफ तो एबे को आगला जे रिटन अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट दरकार कैबिनेट रो रिटन अप्रूवल दरकार तमरा नेशनल इमरजेंसी लगेया पई ओपीएससी प्रीलिम रे पढितला मन रखिबो सो तिन्नी थरा हमर ऑलरेडी नेशनल इमरजेंसी ए पर्यंत लगा सरिलानी नेक्स्ट क्वेश्चन 74 with reference to emergency in India consider the following part 18 of the constitution speak of emergency provision India has witnessed two instances where a national emergency was declared under article 360 of the constitution financial emergency has been declared never been declared in India answer kono only one sir कोडा हमरा only two कोडा Sir, only two. 1 and 3 ठीक है 1 and 3. 1 and 3. ओके ओके हमरा नेशनल इमरजेंसी मन रखि था केते नंबर आर्टिकल 352 एटा केते लिखा हिची 360 एटा भूल 352 आ केते थरा हमें कहले इंडिया हैज विटनेस 3 टाइम्स तीन थरा हमें पढिले ता पूर्वटा 352 रे तापरे फाइनेंशियल इमरजेंसी होची केते 360 ए पर्यंत फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हेन तो एटा हमर ठीक अछि 3 ठीक अछि ओके 2 डा भूल अछि हमर इमरजेंसी प्रोविजन ता पार्ट हमर लिखाई जेठी 18 ठीक ना भूल अछि ठीक है ओके सो पार्ट 18 ने हमें कहले इमरजेंसी प्रोविजन सो आंसर कोन हे जिवो ओके 1 and 3 only 2 हे जिवो हमर करेक्ट आंसर ओके तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन करिवा नेक्स्ट क्वेश्चन होची 75 क्वेश्चन नंबर 75 रे कोन अछि emergency provision contained in part
15 of the Constitution, the Union government has recently decided to observe 25th June every year as संविधान हत्या दिवस। कोड़ा ठीक है। सेकंड ठीक है only हमें only. कितना नंबर पार्ट रे अछि 18 रे। एबे 18 कले तो एटा हमरा भूल अछि। सेकंड कथा हला जो नेशनल इमरजेंसी लगा जायतिला इंदिरा गांधी के समय रे सेटा जून 25 1975 रे लगा जायतिला। सेति पई जून 25 को आमेरो एबे जो आमे गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी के समय रे आमे कहू संविधान हत्या दिवस माने डेमोक्रेसी को पूरा डिस्ट्रॉय करिया को ट्राई कराइतिला। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बाहर जाई के माने इमरजेंसी लगेइतिले। सेति पई जून 25 को आमे संविधान हत्या दिवस बोली आमे कहूचे जोटा कि इंदिरा गांधी के समय रे ए नेशनल इमरजेंसी लगा जाइतिला। सो आंसर कोन हे जिवो ना ओनली 2 हे जिवो करेक्ट आंसर। 76 द राइट टू एजुकेशन 2009 aims to provide free and compulsory education for children between age group of 6 to 14 years under article 21A. Article 21A has been inserted. Yes, code amar ठीक अछि only one One. it is 86 amendment okay very good okay तेनु देखो ए जो हमें कहिले राइट टू एजुकेशन जोटा कि हमर फंडामेंटल राइट रे अछि केते नंबर आर्टिकल 21A तीनटा क्वेश्चन ओपीएससी रे कोई लाइन को नेकी पडितला जे राइट टू एजुकेशन 6 रु 14 वर्ष पिलां को फ्री आउ कंपलसरी एलिमेंटरी एजुकेशन दिया 6 रु 14 वर्ष में कहले एलिमेंटरी एजुकेशन नॉट हायर एजुकेशन फ्री नो इंडिया रे एलिमेंटरी एजुकेशन ता फ्री हायर एजुकेशन फ्री नुहे। सो एटा हमर केते ना 21A रे हमर रहिला राइट टू एजुकेशन एटा हमर केबे ना 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 एटा माने रखिबो लास्ट ईयर पढिथिला जे 86 अमेंडमेंट एक्ट केबे 2002 रे हमर 86 अमेंडमेंट एक्ट आसिला जोथिरे 6 रु 14 वर्ष पिलां को फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन आसिला। सो 86 अमेंडमेंट एक्ट रे तीनटा जिंस हेतिला 86 अमेंडमेंट एक्ट रे जोडा 2002 रे तीनटा जिंस हेतिला। प्रथमे कोन हला ना आर्टिकल 45 डीपीएसपी रो एइथिरे कोन थिला ना 6 रु 14 वर्ष पिलां को हमर फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन थिला। तो सेइडा डीपीएसपी रु हटेई के आनी की आमे फंडामेंटल राइट रे रखले कोन पई रखले ना आमे कहले डीपीएसपी रे रहिले दिस इज नॉन जस्टिसेबल माने जदी स्टेट या कंपलसरी एजुकेशन न देला ताले आमे ता नारे केस करि परिबा नाही जेहेतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉन जस्टिसेबल यू कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट। किंतु जेतेले आमे सेई जो 6 रु 14 वर्षटा जेतेले फंडामेंटल राइट रे आनी के ऐड कले ताले स्टेट सेना मानिया पई बाध्य से माने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दबा पे बाध्य न हेले कोन करबो तमे सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट रे जाई की स्टेट अगेंस्ट रे केस करो। किंतु डीपीएस रे थिला बेला हमें करि परिबेनी काहे कि एटा नॉन जस्टिसेबल थिला तेनु एटा जेहेतु हमें ताकू जस्टिसेबल करिया पई एइथिरु हमें जो 6 14 वर्ष पिलां को एइठु आनी के हमें कोठी रखिले ना 21A रे रखिले फंडामेंटल राइट ओके जोटा कि हमें कहले 0 to 6 इयर्स सॉरी 6 to 14 इयर्स हमें कहले 6 to 14 वर्ष ओके 14 इयर्स हमें कहले। तो एइठु जेतोळे हमें नेई गले एइठी कोन रहला बाकी रहला एमान कहले 0 to 6 इयर्स यारली चाइल्डहुड केयर तो चाइल्डहुड केयर हमर एइठी रहला जोटा कि अंगनबाड़ी रे हमें कहूचे अंगनबाड़ी रे जो हमर छोट पिलां को 6 वर्ष जाय छोट पिलां को केयर नि जाउची तो सेटा को हमें कोन करचे ना डीपीएसपी रे रखा गला। आ उडे हितला कोन सेटा ना हमर फंडामेंटल ड्यूटी रे थिला फंडामेंटल ड्यूटी रे कोन थिला ना इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल। सो 86 अमेंडमेंट एक्ट रे तीनटा जिंस हितला गोटे डीपीएसपी रे चेंज करा गला तार सब्जेक्ट को कंटेंट को हटेई कि नै कि फंडामेंटल राइट रे रखा गला एंड सेठी 0 to 6 इयर्स ऐड करा गला 6 रु 14 वर्ष जोटा कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 रे रहला। फंडामेंटल ड्यूटी रे हमर कोन करा गला पेरेंट मानकर ड्यूटी कोन करिवे ना स्कूल को पिला को पठेबे पेरेंट ड्यूटी इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल। तेनु एटा मने रखिबो तीन थर ऑलरेडी पढी सलन ओके तेनु ए तीनटा का स्टेटमेंट तार मने ओके आउ केबे हेइथिला 86 अमेंडमेंट एक्ट सेटाई मने रखि 2002 रे हमर एटा आसेथि ओके। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जे
हमर जो नेशनल फ्लैग रहिला फर्स्ट हमर जो नेशनल फ्लैग हैज रेड येलो एंड ग्रीन स्ट्रिप ओके व्हाइट नथिला हमर जो प्रथम भारत रो जो हमें कहले फ्लैग हेथिला त रेड येलो ग्रीन स्ट्रिप पिंगाली भेंकैया design a flag with red and green strip in 1919. The current tricolor was adopted in 22nd July 1947. कोडा भितर ठीक अछि Sir, C. 1 and 3 only. 1 and 3. One and three. Okay. ओके ठीक अछि तो हमरो आंसर कोन हबो एटा ना 1 and 3 हबो ओके तेनु हमर फर्स्ट नेशनल फ्लैग जो रहितला रेड येलो आ ग्रीन स्ट्रिप एटा केबे हमर फर्स्ट नेशनल फ्लैग जो हमें कहूचे हमर केबे करा जायतला का 19 21. नहीं एटा 1906 1906 रे अगस्त 7 तमर एटा परीक्षा रे पड़ीथिला आईएस रो ओके अगस्त 7 अगस्त 7 1906 रे हमर जो नेशनल फ्लैग हमर प्रथम हैला रेड येलो ग्रीन एटा हमर कोन ना फर्स्ट कराइतला सो हमर जो फ्लैग रहिला तो डिजाइन हमें कहूचे बेंगाली भेंकैया डिजाइन करिथिले तो रेड आ ग्रीन स्ट्रिप हमर थिला किंतु हमें पर हमें कोन कले गांधी एथिरे ऐड करिथिले कोन ना व्हाइट कलर टा हमर गांधी यूज करथिले एंड एटा 1921 रे एक्चुअली डिजाइन करा केबे 1921 रे हमर एटा डिजाइन कराइतला करेंट जो हमें जो ट्राई कलर हमें कहूचे तो सेटा केबे अडॉप्टेड करा जायतला वेरी वेरी इंपोर्टेंट परीक्षा रे मन रखिबो ओपीएससी हमर जो फ्लैग हमर अडॉप्टेड कराइतला 22nd जुलाई 1947 है तो एटा थर्ड स्टेटमेंट हमर ठीक अछि अच्छा हां तो मते कुह ई जो फ्लैग ता अछि हमें कहूचे फ्लैग रो हमें लिखिबा लेंथ टू विड्थ रेशियो केते 3:2 एटा परीक्षा पड़तला सो 3 एटा 2 सो 3:2 हमर जो फ्लैग रो डिजाइन करा हबो ता लेंथ ता होची यदि हमें कहिबा 3:2 रेशियो रेट हमर मेंटेन करा जाय ओके एंड हमर ए बॉलिंग में हमर इंडिया रो भी फ्लैग गुडा को डिफरेंट जगह डिफरेंट हमर लोक डिजाइन करिथिले मैडम बिकाजी कामा भी हमर कोन करिथिले इंडिया रो फ्लैग डिजाइन करिथिले आउ सी कोठी एक्चुअली जो इंडिया रो फ्लैग को अनफोल्ड करथिले पेरिस रे ओके पेरिस रे हमर अनफोल्ड करिथिले तन सेटा तमे माने रखिबो देन नेक्स्ट क्वेश्चन होछि जे the Citizen Act 1955 prescribed 5 years of acquiring citizenship by birth, descent, registration, naturalization, and incorporation of the territory. Citizen Amendment Act 2003 introduced a new scheme called Overseas Citizen of India, OCI, जो हमें कहूचे card holder by merging the person of Indian origin card scheme and the overseas Citizen of India card scheme. तो आ भितर कोडा हमर ठीक अछि कि भूल अछि Only one. Only one. ओके ओनली वन ता हमर ठीक अछि माने रखिबो तो हमर जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जे को माने भारत रो नागरिक हेई परिबे कोन केमिति ना प्रेस्क्राइब 5 वेज पांचटा वे तमे करि परिबो जदि तमे एठी जन्म हैछ तो बाय डिफॉल्ट हमें जन्म हैछ एठी तो बाय बर्थ हमें सिटीजन पाई रेजिस्ट्रेशन तमे जदि जने आसी कि मिनिमम 10 वर्ष कि 15 वर्ष रहउची रेजिस्ट्रेशन करी परिबो यूटिलाइजेशन
न्याचुरलाइजेशन हमें कहले न्याचुरलाइजेशन तो ये पांचटा हमर कोन होची म्यूट करो ओके ठीक अछि तो एडा हमर होची कोन तो सेकंड जो होची जे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2003 इंट्रोड्यूस ए न्यू स्कीम कॉल्ड ओवरसीज सिटीजन कार्ड ओसीआई कार्ड हमें कहूचे बाय मर्जिंग द पीआईओ एंड ओवरसीज ना एटा मर्ज सर 2015 रे हितिला शायद हां 2015 रे सर हितिला 2015 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एटा भी परीक्षा रे पढितला तमरो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 370 एंड 35A आर्टिकल 370 हमें कोन कहले जो स्पेशल स्टेटस दिया होची जम्मू एंड कश्मीर से जहां भी हमरो इंडिया रे लॉ होउथिला सेटा जम्मू एंड कश्मीर रो माने तार विधानसभा रे जो पर्यंत पास हो नथिला सेटा एप्लीकेबल हो नथिला ओके किंतु हमें आर्टिकल 370 हटे दिला परे तेनु जहां भी इंडिया रे हमरो पार्लियामेंट रे लॉ होची दैट इज एप्लीकेबल टू हमरो जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 35A of the constitution it related to what बोली हमने कह देछे so 370 was a temporary provision allowing the Jammu and Kashmir to have its own constitution limiting the Indian parliamentary legislative authority in the state 35A grant Jammu and Kashmir legislature the authority to identify permanent resident and delineate their specific rights and privileges कोडा ठीक अछि C. Both 1 and 2. ओके सो दीडा का हमर ठीक अछि आर्टिकल 370 होची स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर माने इंडिया रो संविधान माने पार्लियामेंट रे जहा लॉ हबो अनलेस अंटिल एटा जम्मू एंड कश्मीर रो लेजिस्लेटिव असेंबली जदी पास न हिची सेटा एप्लीकेबल नहीं डिफेंस आउ हमर एक्सटर्नल अफेयर को छाडी की आउ जहा भी लॉ हबो जम्मू एंड कश्मीर से माने जो पर्यंत निजे अडॉप्टेड करी नाहंती तांकर संविधान माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और तांको विधानसभा रे से पर्यंत सेटा हमरो तांको स्टेट को लागू हो नथिला आर्टिकल 35 कोन ना को माने परमानेंट रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो रेसिडेंस हमें कहूचे सेटा हमर 35 दीटा को परीक्षा रे तमरो ओपीएससी रे पढितला दीटा स्टेटमेंट आर्टिकल 370 कोन स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर 35A कोन को माने जम्मू एंड कश्मीर परमानेंट रेसिडेंट सेटा 35A रे थिला तो कोन हमर हबो ना जो माने परमानेंट रेसिडेंट तमे बाहर लोक जाई कोडी जम्मू एंड कश्मीर रे जगह किनि पार नथिला आगु आमे थ्रू आउट इंडिया रो सब स्टेट रे किनि परिबा जम्मू एंड कश्मीर रे किनि परिबानी काहे की ना तार आमे कहबा जे जो माने परमानेंट रेसिडेंट से माने किनि परिबे तो आउ कोन थिला ना तमे जम्मू एंड कश्मीर सपोज जने जो जिया आउटसाइड मैरिज करूची आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो मैरिज परे तांकर जो हमरो मामे कहबा पिला माने रहिले तांकर हेरिडेटरी प्रॉपर्टी राइट आउट रहिबो आन सेति भी तमे वोट देई परिबनी तमे इलेक्शन रे किया ही परिबनी जॉब करी परिबनी सब रेस्ट्रिक्शन रहउतला ओके तो ए 35A रे से माने केवल जहा को सर्टिफाइड करिवे जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट ता पर ताको मिलुतला सो 35A एडा होची कोन ना परमानेंट रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेटा हमर कहउतला 370 कोन ना स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर दिया होतला सो दीडा रेको ठीक अछि और दीडा रेको ओपीएससी रे पढितला बाय हार्टली मन रखो ओके सो दीडा हमर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन 80 इन केशवानंद भारती केस 1973 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड preamble is not an integral part of Indian constitution preamble is neither grants substantive right nor enforceable in the court who account could have only two only two okay कौन हबो Only 2. okay only two is the correct answer हमर केस हमर जो preamble हमें कहिले preamble को नहीं के हमर कोन होची ना प्रथमे 1960 रे ओडे केस असला तार ना होची बेरबरी ए केस रे कुआ गला जे preamble is not a part of कोन ना हमर कॉन्स्टिट्यूशन
नॉट ए पार्ट ऑफ हमर कॉन्स्टिट्यूशन एथिरे कहला ये कॉन्स्टिट्यूशन ओटे पार्ट नुहे किंतु पारे जेतबे 1973 रे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला सही केस रे कहला गला यस आमे जो यालियर जजमेंट देथिलु सेटा रॉन्ग अछि एबे कहिले प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ हमर कोन ना कॉन्स्टिट्यूशन तो तापर पुनी जोटा कि 1995 रे एलआईसी केस रे आसीबो एथिरे कहबो सेटा को पुनी आउथरे कहबो यस प्रिएम्बल इज ए पार्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओके इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ वर्तमान कंडीशन है कोन यस प्रिएम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो प्रिएम्बल को लेके बहुत गुडे क्वेश्चन हमर पडिथिला ओके सो प्रिएम्बल ले हमर तीनटा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे किछिटा वर्ड नखला जेतेबेला हमें 1949 प्रिएम्बल को केबे हमर अडॉप्टेड करा गला ना 26 नवंबर 1949 ओके तो एटा ओपीएससी रे पडिथिला ओके तो एटा को हमें कोन कहूचे कॉन्स्टिट्यूशन डे बोली कहै होची एबे सेलिब्रेट करा जाउची कारण एई दिन हमें प्रिएम्बल को अडॉप्टेड करिथिले तो एटा को हमरा कॉन्स्टिट्यूशन डे बोली कहउची कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस हमें कहउचे कॉन्स्टिट्यूशन डे बोली हमें कहउचे 26 नवंबर 1949 रे तो 26 नवंबर 1949 रे जो अडॉप्टेड करा जाइथिला सेते बेले हमर सर्टेन वर्ड नथिला जोटा कि पारे हमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे हमरा ऐड करा जाइथिला मते कुह को तीनटा वर्ड जोटा सेकुलर आगो सोशलिस्ट Secular integrity. सेकुलर SSR. सॉरी Integrity. सेकुलर आ गोटे कोन इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी तो ये तीनटा एक वर्ड हमर कोन ना 1976 रे ऐड कराइतला जोटा कि हमर जेतेबेले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नथा तेनो तुमको जेतेबेले पचरा जिवो हमर 1950 बेलु को गोटे प्रिएम्बल दिया हितिबो हेतिरे जदि दिया हितिबो जे सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एई भडिया थिला तो सेटा करेक्ट ना रॉन्ग सोशलिस्टिक वर्ड हमर नथिला तापरे इज प्रिएम्बल एटा हमर प्रिएम्बल टा अमेंडेबल ना नहीं यस प्रिएम्बल इज अमेंडेबल हमें कहले अमेंड हेछि हमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे गोटे ऐड हेछि इज प्रिएम्बल जस्टिसेबल और नॉट not justice. No. प्रिएम्बल इज नॉट जस्टिसेबल ओके प्रिएम्बल इज नॉट जस्टिसेबल माने तमरो जेमति कि तमरो फंडामेंटल राइट इज जस्टिसेबल जदी तमर राइट्स अगेंस्ट रे कोनोसी लॉ आसुची तमे इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट को जाउछ तार वायोलेशन जदी होउची सुप्रीम कोर्ट को जाउछ एनफोर्सेबल पाई किंतु हमर प्रिएम्बल टा हमर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट नुहे ओके एंड इट इज neither grant substantive rights nor enforceable by the court एटा हमर ठीक अछि फास्ट हमर भूल अछि तो एइथिरे कोन हेल्ड दैट इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस रे आसितला अच्छा प्रिएम्बल जो हमें कहउचे चारिटा जिंस कहले प्रिएम्बल ले जस्ट हम माने रखि थाओ प्रिएम्बल ले हमर कोन कोन पढिथिला जोडा को ओपी माने आईएएस की ओएस रे क्वेश्चन पढिथिला जे प्रिएम्बल को नै कि पढिथिला गोटे क्वेश्चन हमर जो लिबर्टी को हमर लिबर्टी जो हमें कहले लिबर्टी रे कोन अछि हमर लिबर्टी रे कोन कोन अछि वर्ड मन रख गोटे हमर होछि लिबर्टी होछि थॉट एक्सप्रेशन belief, faith and worship. ओके सेइथिरे थिला लिबर्टी रे हमर थिला कोन इकोनॉमिक लिबर्टी इकोनॉमिक वर्ड ता हमर लिबर्टी रे नहीं कोथिला अछि हमें कहिथिले जस्टिस रे जस्टिस ता हमें जस्टिस ता हमर थिला कोथिरे सोशल इकोनॉमिक economical, political. एंड पॉलिटिकल ओके तो ये तीनटा का हमारा जस्टिस है लिबर्टी ता कोन ना बिलीफ फेथ वर्शिप बिलीफ फेथ ओके वर्शिप expression लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. पढिथिला आउटे लिबर्टी रो मान्य कोन
ओके आईएएस रा प्रीलिम थिला लिबर्टी रे माने मन रख एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट Absence of restraint. Absence of restraint. ओके तो कौन सी रेस्ट्रिक्शन करा जीवनी तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट आमे सेटा कहछे लिबर्टी आ गोटे क्वेश्चन पडिथिला इक्वालिटी इक्वालिटी माने कोन एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज आमे प्रिविलेज का को दबानी लॉ आगे समस्त समान ओके एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन ओके पर्सनल डेवलपमेंट ग्रोथ पई लॉ आगे समस्त समान सो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज होची हमर इक्वालिटी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट होची हमर लिबर्टी आ दीटा को क्वेश्चन तमरो आईएएस रा प्रीलिम रे पडिथिला सो आमे कहले जस्टिस जस्टिस रे हमर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कहला लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप ए दीटा को क्वेश्चन तमरो पडिथिला डेट ऑफ अडॉप्शन पडिथिला केबे 26 नवंबर 1949 जोटा को हमें कोन कहूचे कॉन्स्टिट्यूशनल डे बोली हमें आ गोटे पडिथिला जे ए जो प्रिएम्बल इट इज रिफ्लेक्ट द नोबेल विजन एंड द ग्रैंड आइडियाज ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे जो माने बसी की संविधान तैयारी करथिले तो तांकर ग्रैंड आइडिया नोबेल विजन ता पडिथिला जे हमर जे the maker of the mind of the maker of the constitution कोठी रिफ्लेक्ट करूछ एडा तमरा आईएएस रा प्रीलिम क्वेश्चन थिला तडा कोठी प्रिएम्बल ले हमर रिफ्लेक्ट करिछि द आमे कहबा द आइडियाज और द ग्रैंड नोबेल और विजन ऑफ द मेकर ऑफ द माने कॉन्स्टिट्यूशन जो माने मेकर रहले तांकर आइडियाज ता हमर प्रिएम्बल ले रिफ्लेक्ट करिछि सेहि दिबा हमें प्रिएम्बल को कहूचे द समरी एसेंस और द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली हमें कहूचे ओके तो प्रिएम्बल टा को हमें द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहूचे सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहूचे तो हमरो काहा को ना प्रिएम्बल को जदी पढिछि परीक्षा रे हार्ट एंड सोल ताल एडा होछि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 32 ओके खाली जदी सोल पचारिछि ताले सेटा होछि हमर Preamble. So, mane rahila next question, Article 51A. So, how many of the following are mentioned in the fundamental duty under Article 51A to protect and improve the environment and safeguard the forest wildlife, to protect monument, place and object of artistic or historic, to value and preserve the heritage of the country. Okay. Up composite culture. आ भितरु हाँ सर कोडा हमर फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 ए रे मेंशन अछि वैल्यू एंड प्रिजर्व ओके सो हमें देखिबा प्रथमे ए जो फंडामेंटल ड्यूटी हमर रहला एटा कोड हमें आनी छे रशिया यूएसएस रशिया रे आनी छे फंडामेंटल ड्यूटी हमर नथिला ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ए केबे ऐड करा गला 42nd अमेंडमेंट कमिटी रो रिकमेंडेशन हमें कहिथिले Soran Singh ठीक है म्यूट करो ओके जेतल मु कहछि सरन सिंह कमिटी रिकमेंडेशन रे ओरिजिनल हमर जेतबेले एडा आसीला त सेतबेले 10टा फंडामेंटल ड्यूटी थिला केतरा थिला तो 10टा हमर फंडामेंटल ड्यूटी थिला 11 नंबर जो हमें कहले इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल 11 नंबर ता हमर केबे आसीला ना 86 अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट ओके सो फंडामेंटल ड्यूटी रे हमर कौन कौन अछि ना हमें कहले टू अपहोल्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन हला टू प्रिजर्व द हमें कहले जे टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम गोटे हमर रहला ओके तो आउ कोन ना टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर सो तीनटा तो डेफिनेटली ठीक अछि पांच दीटा को ठीक अछि कि भूल अछि भूल अछि डीपीएस सर भूल अछि सर भूल अछि हमें टू protect and improve the wildlife and एटा कोथि अछि डीपीएस 48A सर डीपीएस सर 48 रे अछि आर्टिकल 48 48 तापर नेक्स्ट क्वेश्चन दा जो जे Article 49 हां 39 49 सर ओके एडा भी ओपीएससी प्रीलिम रे ओएस रे पढितला प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट हला 49
50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आउ जो प्रोटेक्ट द एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द वाइल्ड लाइफ एटा होचे हमर केते ना 48 जोटा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे आसीतला ओके सो एटा भूल अछि एटा भी भूल अछि तो ओनली थर्ड है हमर करेक्ट अछि जॉइन करिबा नांती जॉइन कर छी गोटे सेकंड रहि जाओ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में करी चलो गोटे मिनिट खाली मते दियो मु पठे दे ओके तो एटा ला नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन और डायरेक्ट एटा परीक्षा रे तमरा आगुरु ओपीएससी रे पढी छिबी हमर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट जोटा 143 सुप्रीम कोर्ट रो एडवाइजर जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केते नंबर 143 143 143 ओके एडवाइजर जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जत्ते बेले कोनसी लॉ को नै कि एक्चुअली डाउट रहिबो प्रेसिडेंट हमर कंसल्ट करिया पई सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस मागी परिबो तो सेटा को कहै हमें एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दिए हमर प्रेसिडेंट को अच्छा जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दबो सेटा प्रेसिडेंट एक्सेप्टेड करिया पई बाध्य ना बाध्य नहीं हां President is not bound by the advice of the Supreme Court. The Supreme Court जो advice टा दबो, President is not bound to accept that advice. तो एटा मने रखिता एटा ही परीक्षा रे पड़ितला जे 143 रे सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट एडवाइस मागिबे किंतु सु जो एडवाइस टा देबे तो सेटा माने मानिया पे बाध्य नै अच्छा जते बेले प्रेसिडेंट हमर मागिबे सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट तो सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्ट माने रिक्वेस्ट करिवे ओटे लॉ ऊपर एडवाइस दबा पई से एडवाइस करि दे तो सब पिलां को आउथरे पठेली 110 जन जॉइन करछन होउनी इस्तोडे ताने कौन है मैम सर लेफ्ट हो गले इनविजिबल होची कि काहको No visible होनी रेबे आसिले हां एबे होतु एला एला
सर वॉइस आसु तार की सुना जाउनी एबे सुबा गला तो यस सर माने प्रेसिडेंट जेतेबेले मागिबे सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस दीटा कंडीशन जदी एटा गोटे प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी हेची संविधान तैयारी हवा पूर्वरु ब्रिटिश समय गुडे एग्रीमेंट हेची ना नहीं तो जदी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी अछि ताहाले सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस दबा पे बाध्य ओके जदी हमर एटा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी अछि तो ताहाले सेही केस रे से दबा पे बाध्य नहीं दीटा कंडीशन सीए जदी संविधान तैयारी हवा पूर्वरु गोटे ट्रीटी अछि तो ता ऊपर तो किछि जणा नहीं तो सेठी सुप्रीम कोर्ट क्लारिफाई करिवो जे आर मीनिंग कोन हवा दरकार तो सही केस रे सी सेटा हमर एडवाइस दबा पे बाध्य किंतु जदी संविधान तैयारी परर गोटे कथा आसुची तो सेटा रे से दबा पे बाध्य ओके किंतु दीटा एक केस रे जहां भी पर एडवाइस दोउची प्रेसिडेंट सेटा एक्सेप्टेड करिया पई मे बी एक्सेप्टेड करि परंती मे नॉट एक्सेप्टेड हमर करि परंती तेनु सेटा तमे माने रखिबो ओके सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओपीएससी रे पडिथिला एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो थिरे से प्रेसिडेंट को एडवाइस दियंती केते नंबर आर्टिकल 143 तो एई थिरे हमें कहले जो एडवाइस ता हमर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को देबे सेटा से प्रेसिडेंट मानिया पई बाध्य न ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची जे ordinance promulgated by the president must be placed before parliament within what time frame after the start of fifth session 6 weeks 6 months 6 week ओके प्रथमे तो तुम मने रखो मते को ऑर्डिनेंस ता केते नंबर आर्टिकल ले अछि 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट केते नंबर आर्टिकल 123 होची जे सेही थिरे प्रेसिडेंट हमर ऑर्डिनेंस इशू करि परिबे गवर्नर कर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर कर केते एडा करि करे 213 तो 213 होची गवर्नर हैला प्रेसिडेंट कर 123 गवर्नर कर 213 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर केते बेले हमर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आसे an ordinance issue करा जाए ना when the parliament is not in session कारण गोटे लॉ तैयारी करिया कोन ना पार्लियामेंट रो लोकसभा रे पास होबा दरकार तापरे राज्यसभा रे पास होबा दरकार तापरे प्रेसिडेंट कर अप्रूवल सपोज गोटे इमीडिएटली गोटे लॉ एबे दरकार होची किंतु लोकसभा हो कि राज्यसभा हो कि बोथ हाउस हो सेशन ने नाहंती हमको एबे माने इंडिया पाकिस्तान वार होची हमर डिफेंस ऊपर गोटे लॉ आनिबार अछि किंतु हमें देखिबा जे हमर पार्लियामेंट बसिबो 2 मास परे हमको निहाती तो लॉ दरकार ना तो टेम्पररी पई प्रेसिडेंट गोटे लॉ नै के आसी परिबे थ्रू ऑर्डिनेंस सेटा केते नंबर आर्टिकल 123 रे तेनु ऑर्डिनेंस केते बेले आसे ना व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन बोथ हाउस हो किबा गोटे हाउस जदी एबे वर्तमान तांकर सेशन चालिनी तो सेही केस रे टू ब्रिंग ए न्यू अर्जेंट लॉ तो सेति पई हमें कोन ना प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस थ्रू रे 123 रे हमरो आनोती किंतु हमर तमे कोन कलो ना गोटे जो अर्जेंट पई अणा गला किंतु पर कोन हबो ना जेबे पार्लियामेंट बसिबो एटा पार्लियामेंट अप्रूवल करिवो कारण लॉ करिवार दायित्व काहार पार्लियामेंट नाही बोली तमे करि देइछो किंतु पार्लियामेंट जेबे बसिबो से सेटा को अप्रूव करिवो जदी अप्रूव न कला से जोटा हमर टेम्पररी पे आनिथिले सेटा कैंसिल हे जदी अप्रूव करि देला ताले सेटा लॉ हे गला ओके तो केबे हमर पार्लियामेंट जेबे बसिबा हमें कहले जे न बसिबा जगु नथिबा जगु सेटा अणा गला तेनु जेबे पार्लियामेंट बसिबो तार 6 वीक भितरे हमर सेई जो बिल हमर टेम्पररी हमर प्रेसिडेंट आनी थिबे अंडर आर्टिकल 123 रे सेटा हमर पास कर हबो बहुत जदी पास न हला सेटा हमर कोन हबो कैंसिल हे जो नॉल एंड वॉइड सो ट्रिपल तलाक बिल जो आसिला सेटा दीदी थरा हमर कोन हमला ना पार्लियामेंट जेते सेशन ने नथिला तो सेही समय आना जायथिला तो किंतु पार्लियामेंट सेटा अप्रूवल कलानी पुनी रिजेक्ट कर देला तब पुनी रिजेक्ट कला पर माने आउ थरे पुनी ऑर्डिनेंस थ्रू रे आनिले सेकंड टाइम रे माने सेटा को अप्रूवल हेतिला ओके तेनु आउ गोटे कथा होची जे हमें कहिले जते बेले पार्लियामेंट नथिबो लोकसभा हो राज्यसभा हो तांका भितर गोटे हाउस सपोज चाली छी गोटे हाउस नाही से केस रे भी ऑर्डिनेंस आनी परिबे काहे कि ना बिलटा एक्ट होबा पई 2टा हाउस रे अप्रूवल दरकार जदी गोटे हाउस अछि गोटे हाउस चलन सेती रे भी हमें लॉ आनी परिबानी
तो सही केस रे भी हमें ऑर्डिनेंस आनी परिबा तो ऑर्डिनेंस आनिले हमर प्रेसिडेंट तापर जेतबे हमें कहले पार्लियामेंट बसिबो केबे पार्लियामेंट बसिबो जाना नै जे मासे पर बसि पारे 2 मास पर बसि पारे 3 मास पर बसि पारे 4 मास पर बसि पारे किंतु 6 मास रे मिनिमम 6 मास रे गोटे थरा बस ओके सपोज हमर पार्लियामेंट 6 मास रे बसिला तनु जेबे बसिला एटा इंट्रोड्यूस हबो जे जोटा हमर 6 मास रे बसला पर तार 6 वीक भीतर सेटा पास हबो सेति पई कहिबा जे गोटे जो हमर ऑर्डिनेंस रो मैक्सिमम लाइफ केते ओके अब ऑर्डिनेंस रो मैक्सिमम लाइफ केते ना जोड़ा पार्लियामेंट टेम्पररी पई प्रेसिडेंट नै के आसीथिले तार केते दिन पई हम रखि परिबा ताकू असो सेटा केते दिन पई हम रखि परिबा 6 मासे 6 वीक पर्यंत हम रखिबा 6 मंथ एंड 6 वीक सो मैक्सिमम लाइफ ऑफ ए एटा मन रखियो परीक्षा रे पढितला मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस हां तो केते हमरो ना 6 मंथ एंड 6 वीक काहे कि मु कहली ना जदी पार्लियामेंट हमें कहले जे 6 माने गोटे मंथ भीतर बसिला तो तार 6 वीक भीतर पास हबो 2 मास पर बसिला तार 6 वीक भीतर जदी 6 मास पर बसिला तो तार 6 वीक तो मैक्सिमम केते जाय हमें ताको एक्सटेंड करि परिबा 6 मंथ एंड 6 वीक जोडा को कहउचे मैक्सिमम लाइफ ऑफ ए हमर ऑर्डिनेंस होची 6 मंथ 6 वीक तापरे हमर same question under which of the following article of the constitution the president of India has empowered to promulgate ordinance making power of the president mu kete कहली 1 2 3 1 2 3 123 मने रखिबा OPSC रो previous year question 123 if the annual budget is not passed by Lok Sabha जदी हमर बजेट ता पास हेलानी लोक सभा रे ताले कोन हबो ऑप्शन डी सर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन देते ओके कोन हबो आंसर कोन है ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करिवे जदी बजेट ता पास न होला प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करिवे कॉज कोन पई ना बजेट हो जोडे मनी बिल आ मनी बिल ता कोन ना केवल लोकसभा रे पास है बजेट इज ता हमर कोन ना बजेट गोटे मनी बिल आ मनी बिल ता हमर कोन हुए ना कोठी पास हुए ना मनी बिल ओनली लोकसभा रे पास हुए विथ कोन ना सिंपल मेजॉरिटी तेनु गवर्नमेंट पाखरे मेजॉरिटी अछि बोली से गवर्नमेंट रे अछि गोटे मनी बिल ता सिंपल मेजॉरिटी पास होबा कथा ना नहीं सिंपल मेजॉरिटी माने कोन जेति कि हमें जो लोक से दिन प्रेजेंट आ वोटिंग अछि तार आधार अधिक जदी पूरा भी नहीं जीवो 272 टा सीट एमानकर अछि बोली गवर्नमेंट रे अछंती द मोमेंट सेमानकर जदी 272 रु कम सीट थिबो तार गवर्नमेंट भांगी दिबो दे लॉस द मेजॉरिटी इन द लोकसभा से केस ना गवर्नमेंट भांगी जीवो तेनु मनी बिल टा गोटे कोन हुए ना सिंपल मेजॉरिटी रे लोकसभा रे पास हुए राज्यसभा रे तार कोनसी माने राज्यसभा रे सेटा पास न हले चलेबो तेनु गोटे मनी बिल और बजेट पास होनी माने मनी बिल टा पास होनी मनी बिल पास होनी माने दे डोंट हैव द सिंपल मेजॉरिटी इन द लोकसभा रे यदि सिंपल मेजॉरिटी नाही ताहाले कोन हबो ना गवर्नमेंट भांगी जीवो दे लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस सेटा थाउची पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो व्हाट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मेजॉरिटी पार्टी रूल्स as long as they have the majority in the Lok Sabha they will be in the power the moment they lost the majority in Lok Sabha semanka government भांगी तो एमिति बहुत गवर्नमेंट भांगी छै हमें कहू छै जे अटल बिहारी वाजपेयी हो और 90s रे तमे चंद्रशेखरनकर गवर्नमेंट हो तो समस्तनकर एचडी देवगौड़ा हो समस्तनकर गवर्नमेंट भांगी छी तो केते बेले ना जदी तांकर मेजॉरिटी नंबर कमी जीवो तो सेति में हमें कहू छै जे बजेट ता जदी पास हेई पारुनी बजेट इज ए मनी बिल ता हमर केवल लोकसभा रे पास हेई गला तेनु एटा पास हेई परनी माने दे डोंट हैव द मेजॉरिटी इन द लोकसभा रे मेजॉरिटी नाही माने कोन ताको गवर्नमेंट लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन द हाउस तेनु सेमान को कोन करिया पड़िबो रिजाइन करिया पड़िबो सो प्राइम मिनिस्टर सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सो डी हेज हमर करेक्ट आंसर हमर बजेट किए को डिपार्टमेंट हमर बजेट तयारी करछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is responsible for preparation and presentation of the union budget in the parliament
huh? Department of Economic Affairs. Economic Affairs. Department of Department of Economic Affairs mane rakhibo Economic Affairs. Department of Economic Affairs seda IAS ର prelim question thila je budget ko department tiyari କରୁଛି Department of Economic Affairs amara କରୁଛି So 87 with reference to Regulating Act 1773 consider the following it is created an executive council to assist the Governor General of Bengal it established Supreme Court of Judicature with original and appellate jurisdiction. It permitted the servant of the company to engage in the private service. Good, our answer. Huh? 1 and 2. 1 and 2. देखो, Regulating Act 1773. एटा कहाँ समय आस्तिला? Warren Hastings. Warren Hastings. इथरा most important point तो मने रखिबो जीए गवर्नर ऑफ बेंगल थिला ताकू गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को आगुरु रॉबर्ट क्लाइव थिले तो से अनुसार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे जे गवर्नर ऑफ बेंगल थिबे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हे जिवे वारेन हास्टिंग्स हे जिवे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रेगुलेटिंग माने कोन रेगुलेटिंग एक्ट कोन पे आना जाइथिबो ना कंपनी रो हमर जो ट्रेड टाकू रेगुलेशन करिया पई रूल्स रेगुलेशन करिया पई तारो रेगुलेटिंग हमारा एक्ट आसीथिबो ए रेगुलेटिंग एक्ट रे कोन आउ कोन करा जिवो ना ओडे सुप्रीम कोर्ट क्रिएट करा जिवो ए सुप्रीम कोर्ट कोठी हेतिबो Calcutta. कोलकाता कोलकाता रे हमर हेतिबो सुप्रीम कोर्ट ओके एंड एथिरे कुहाबो जे जो कंपनी रो सर्वेंट माने अछंती से माने कोन करथिला सेते बेले पास मिलुथला तांको से पास को यूज करी कि निजे प्राइवेट बिजनेस करूथिले आ निजे प्रॉफिट करूथिले एथिरे कहिले जे कंपनी रो कोनोसी सर्वेंट निजे प्राइवेट बिजनेस करि परिबेनी कंपनी रो पास नै तो सेडा को पूरा बंद करा जायतिला हमर कोन ना परमिशन नो पूरा रेस्ट्रिक्शन करा जायतिला जे कोनोसी कंपनी रो सर्वेंट दे कैन नॉट एंगेज इन द प्राइवेट बिजनेस और प्राइवेट ट्रेड सो फास्ट एटा को ठीक अछि दे एथिरे हम कहले गवर्नर जनरल जे गवर्नर ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल हबो तांकू असिस्ट करिया पई गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 जणिया मेंबर ओके आउ जे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेबे ही इज सुपीरियर देन द अदर गवर्नर जो माने रहिले मद्रास आउ बॉम्बे आउ कोलकाता भितरे कोलकाता रो गवर्नर जे रहिबे से सब तो मोर पावरफुल कहा संगे वार करा जिवो कहा संगे पीस करा जिवो कहा संगे ट्रीटी करा जिवो के डिसाइड करिवो ना गवर्नर जनरल ऑफ द बेंगल सो वारेन हास्टिंग्स थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बेंगल हमरो ओके तो एटा हमरो 1773 रे हमरो आसीतला तो हमर आंसर कोन हे जिवो 1 एंड 2 हे जो हमरो करेक्ट आंसर ओके बुझी पाले ना बुझी पाले Which of the following rights are not available to all persons in India? Equality before law, right against discrimination, freedom to move freely throughout the country, right to contest election. 88. 1 3 4 D. 2, 3, 4. D, sir. D. Not available to all persons in India. कौन हवा आंसर आ रहा 2, 3, 4. 2 3 4 डी को चली ओके मनस्मिता सुजाता डी 1 टा काहे के भूल Right to equality समस्त पे All citizens. Indian and original uncle. yes sir 2 3 4
Okay, so equality before law, the rights are not available to all person in India. Okay, तो एथिरे गोटे restriction आमे कहिथिले कोन restriction कहिथिले जे equality before law president and governor they are exception. तो से माने equality before से माने जदि criminal कोन सी काम करिवे भी तांको अरेस्ट करि हबो. ओके, तो equality before law जोटा में कहूचे एटा हमर केते नंबर आर्टिकल हमें कहूचे ना हमर 14 एटा एक्सेप्शन होछन कि ना गवर्नर आउ प्रेसिडेंट हां प्रेसिडेंट गवर्नर और प्रेसिडेंट होछन एक्सेप्शन एमान को अगेंस्ट कोन से एक्शन नहीं राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन समस्त को ओके फ्रीली मूव थ्रू आउट द कंट्री एटा भी अछि राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन यस हमकु जदी पर्टिकुलर एज हेछि 25 वर्ष होछि तमे लोकसभा रे ओके जदी 30 वर्ष होछि राज्यसभा रे तमे पार्टिसिपेट करि परिबो ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 89 consider the following statement with reference to the fundamental right available under article 20 of the Indian Constitution. Code amar article 20 re available अछि. It is applicable to both individual as well as legal person. Both civil and criminal liabilities can be imposed retrospectively. Protection against double is not available for कोड आबा आंसर 1 and 2 तो हमला ए जो आर्टिकल 20 टा रिलेटेड टू कोन हमर थिला हां प्रोटेक्शन इज Only criminal law. Protection against conviction. ना इसे आर्टिकल 20 का कोन थिला एक्चुअली Protection against conviction of any offense. कोनडा protection of certain offense. Protection in respect to convention from offense. हां प्रोटेक्शन अगेंस्ट हमर कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस हम जो कहूचे जे इट इज एप्लीकेबल टू बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज द लीगल पर्सन यस तो आपको ए जो आर्टिकल 20 टा होची कोन ना तुमको जदी कोनसी जगह रे पनिशमेंट दिया जायछि को भूल पई पनिशमेंट दिया जायछि एथिरे दीटा जिंस मन रखिबो नो डबल जियोपडी माने सेम पनिशमेंट पई सॉरी सेम क्राइम कैन नॉट डबल इतर पनिश करहिबन गोटे भूल करिच तो गोटे थरा ही पनिशमेंट पाइ ओके सो दी थरा पनिशमेंट पाइबनी तो गोटे थरा पई सपोज गोटे पनिशमेंट पई 2 वर्ष जेल थिला 2 वर्ष जाई छरी सपोज पर आउ आसिला जे ना एटा 4 वर्ष जेल तेनु तमरा 4 वर्ष जेल दबनी 2 वर्ष ही तमे जो समय रे भूल करिच सेही समय रे जहा रूल्स रेगुलेशन थिला सेटा तुमको एप्लीकेबल सेटा कहू जे हमें हमरो जे रेट्रोस्पेक्टिवली हमर लागिबन धर एबे गोटे रूल आसिला तमे धर 5 वर्ष तळे गोटे भूल करिथिला सेते बेले ता पई सेही क्राइम पई तमको पनिशमेंट थिला 3 मास जेल थिला किंतु एबे सेटा जतबेले हमें कहू जे चेंजेस हे कि हमर जजमेंट हेनी एबे जजमेंट हैला माने तुमको जजमेंट फाइनल जजमेंट दिया गला आ एबे रा जजमेंट अनुसार जे भूल करिवो ताकू सेही दंड पई ताकू गोटे वर्ष तेनु ताकू 3 मास जेल हबो ना गोटे वर्ष जेल 3 मास जेल हबो बुझी पाला ना मु कोन जो क्वेश्चन करचली से 5 वर्ष तळे गोटे भूल करिथिला तार सेही केस चालू थिला वर्तमान फाइनल जजमेंट एबे हबो सेते बेले जदी से संगे संगे जजमेंट पाई थांदा ताकू 3 मास जेल हे थांदा किंतु एबे जेहेतु बढ़ी जाईची एबे जजमेंट से पाइला एबेरा जजमेंट अनुसार ताकू वर्षे जेल हबा कथा तेनु ताकू कोन दिया जीवो 3 मास जेल दिया जीवो ना गोटे वर्ष जेल दिया 3 मास जेल दिया जीवो से सेही समय रे जते बेले जो क्राइम टा करिथिला सेही समय रे जो ता पई पनिशमेंट जो जो प्रोविजन थिला सेहीटा ही लागू हबो एबे जहा अपडेटेड हेची सेडा लागू हबनी सेति पई रेट्रोस्पेक्टिवली हम जो कहूचे बोथ क्रिमिनल एंड सिविल लायबिलिटी कैन बी इम्पोज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली तमे एबे ओडे जजमेंट आसिला तमकु डायरेक्टली सेते बेलर हमें भूल पई एबे रा लागिबो सेटा न सेते बेलर जहा भूल पई सेते बेलर जहा नियम थिला लागिबो आ ओडे कथा हला तमे भूल करिच सेम भूल पई गोटिए थरा ही दंड पाइबा दी थरा नहीं नो डबल जियोपडी सेटा कहंती आ ओडे कथा हला यू कैन नॉट बिकम ए विटनेस ऑफ योर ओन क्राइम तमे जो कहंती सेल्फ इंक्रिमिनेशन हमें कहूचे तम निज तमे केबे देखिचो किए निजे साक्षी होची निज केस पई
निजे निज केस पई तमे निजे साखी हे परिबो नाही तो एडा होची हमर आर्टिकल 20 रे लिखा जाई छी सो आंसर कोन हिजबो ना 1 and 3 हिजबो हमर करेक्ट आंसर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 90 with reference to the basic structure of the Indian Constitution consider the following statement it has been codified under a single law Parliament cannot take away fundamental right that form a part of basic structure कोड हमर ठीक अछि 2 only हां 2 only ओके सो आंसर कोन हबो ओनली 2 हबो ओके तो एई जो हमें कहले बेसिक स्ट्रक्चर कांसेप्ट केबे आसिला एडा ही परीक्षा रे ओपीएससी रे पड़ता केबे आसिला 3 रे आसिला तो सेही थिरे एई जो बेसिक स्ट्रक्चर ता हमर संविधान में कोडी लिखा अछि ना लिखा नै नो एडा कोडी मेंशन नै ओके बेसिक स्ट्रक्चर ता हमर संविधान में कोडी मेंशन नाही एडा हमर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल केस रे आसिला तो ए बेसिक स्ट्रक्चर हमर कुआ गला केते गुडे हमर की फीचर्स अछि जोडा का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोडा को तमे केबे हेले भी डिलीट करि परिबो नाही फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट रूल ऑफ लॉ हला इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी हला तो हमर सोवरेनिटी वार्ड हला सेक्युलर वार्ड हला ओडा को तमे डिलीट करि परिबो नाही तेनु ए जो हमें कहिले जे ए गुडा को गोटे थर रे आसिली डिफरेंट जजमेंट रे हमर कोन ना ई जो बेसिक स्ट्रक्चर को कोडा बेसिक स्ट्रक्चर एडा वेरियस सुप्रीम कोर्ट रा जजमेंट रे आसी टाइम टू टाइम हमरे एडा को नुवा नुवा ऐड हे चली एबे जदी आउडे नुवा जजमेंट आसिला आउ सेटा भी हमरा ऐड करा हे जे परिबो बेसिक स्ट्रक्चर रे ओके तेनु एडा गोटे टाइम रे हेनी तो ग्रेजुअली एडा ऐड हे चली छि एंड ए बेसिक स्ट्रक्चर जोटा हमर रहिला पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि जे से संविधान में किछि ऐड करि परिबो और डिलीट करि परिबो और चेंजेस करि परिबो किंतु जो गुडा बेसिक स्ट्रक्चर से गुडा को डिलीट करि परिबो नै एई सेंटेंस ता मन रखिता पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट न करी कि से किछि भी चेंजेस करि परिबो अमेंडमेंट हमरो करि परिबो किंतु जेहेतु फंडामेंटल राइट गोटे बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट को से टोटली डिलीट करि परिबो नै कैंसिल करि परिबो नै सो पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे एडा को पूरा हटै परिबो नाही फंडामेंटल राइट को काहे कि एडा गोटे बेसिक स्ट्रक्चर बोली हमें कहूचे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी रा प्रीलिम क्वेश्चन थिला कोटा हमर प्रीएम्बल नाही पॉलिटिकल लिबर्टी सो लिबर्टी हमर कोन होची ना सोशल जस्टिस अछि लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप अछि ओके पॉलिटिकल लिबर्टी नो पॉलिटिकल जस्टिस रे थिला जस्टिस लिबर्टी जो सोशल इकोनॉमिक का पॉलिटिकल जस्टिस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एटा ठीक अछि सो आंसर कोन हबो ना पॉलिटिकल लिबर्टी हमर नथिला ओके नेक्स्ट एटा भी हमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन पडितला चार्टर एक्ट 1813 permitted Christian missionaries to preach their religion. Charter Act 1833 deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative power. Charter Act 1853 separated the legislative and executive function of the Governor General Council for the first time. कौन हरो को सो डी कोछन पिला रश्मि सौम्यरंजन 1 2 3 ओके सब ठीक अछि तो तीनटा के मन रखिबो मु जस्ट हमकु कहि दोछि जो जोडा परीक्षा रे पडितला हम पचारुछि ए चार्टर एक्ट 1833 एथिरे मोस्ट इंपोर्टेंट कोन पॉइंट थिला जोडा हमरो पडितला ओपीएससी हो कि यूपीएससी रे हमें कहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हबो डेजिग्नेशन चेंज हबो हमें कहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे कोन कहले जे गवर्नर ऑफ बंगाल अछि ताकू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वारेन हेस्टिंग्स से गला हमर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पुणी चार्टर एक्ट 33 रे को हबो 1833 रे जो माने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढिना बिल्कुल ओरिड बना पढेबा तो चार्टर एक्ट 1833 रे हमर एटा को गला जे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थिबो ताकू आजि ठो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को आजिबो आउ लॉर्ड विलियम बेंटिक
हमर कोन हे जिवे ना First गवर्नर Governor जनरल of ऑफ इंडिया एटा मन रखिबो आईएएस रे पढितला सेकंड कोटा होची सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर हे गला तांको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहबार कम कोन ना पूरा इंडिया पई लॉस ये करिवे तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हे गला तो बॉम्बे आउ मद्रास रो जो गवर्नर थिले तांकोठू तांको लॉ मेकिंग पावर ता हटे कि निया ओके तेनु एठी कोन ना आगुरु कोन होतला ना बॉम्बे पई बॉम्बे रो गवर्नर लॉ करथिले मद्रास पई मद्रास रो गवर्नर लॉ करथिले बेंगल पई बेंगल रो गवर्नर लॉ करथिले ए चार्टर एक्ट 1833 रे कोन करा गला जे जण को सुप्रीम पावर दिया गला तांको कुआ गला जे यू आर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द होल इंडिया यू विल मेक द लॉ सेति पई बॉम्बे और गवर्नर बॉम्बे और जो मद्रास जो गवर्नर थिले तांकोठू तांको लेजिस्लेटिव पावर ता हटे कि निया ओके पूरा इंडिया पई जणे लॉ करिवो आउ सी होछन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तेनु गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करा गला लॉर्ड विलियम बेंटिक हे गले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आउ तांकू पावर दिया गला थ्रू आउट इंडिया रे लॉ हमर कोन करिया पई इंप्लीमेंट करिया पई आउ गोटे हेतिला जे कंप्लीटली एबोलिशन ऑफ द मोनोपोली ऑफ द ट्रेड इंक्लूडिंग ट्रेड विथ टी एंड चाइना ओके तो जो आगुरु कोन होतला ना इंडिया रे किए आसी की बिजनेस करूतला ना गोटी ही कंपनी बिजनेस करूतला सी होची किए ना ईस्ट इंडिया कंपनी तो ब्रिटेन आउ गुटे कंपनी थिले कहले काहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी खाली करिवो बिजनेस जेमति कि हमरो कुआ जाउछि जे मोदी को क्रिटिसाइज कराउछि जे जहां भी प्रोजेक्ट दोछन अडानी का और अंबानी को दोछन अलग कंपनी को काहे कि दोना सिमिलरली त सेते बेले ब्रिटिश रे हमरो ब्रिटिश समय रे कुआ गला जे केवल ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करूतला तो अलग कंपनी गुडा जो माने ब्रिटेन थिले से कहले हमु काहे कि दोनो तो काहे कि मोनोपोली केवल ईस्ट इंडिया कंपनी रो चलिबो तो सेति पई अलाउ करा गला जो मोनोपोली थिला ईस्ट इंडिया कंपनी ताको हटे दिया गला सब कंपनी जे चाहिबो आस्की बिजनेस करे ओके आउ सेते बेले कोन थिला एटा एक्चुअली 1813 रे थिला जे मोनोपोली ऑफ ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश करा हेतला किंतु दीटा जिंस ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी रो होल्ड थिला कोन ना ट्रेड विथ टी एंड ट्रेड विथ टी जेते से माने टी प्लांटेशन करितले टी ऊपर तांकर ईस्ट इंडिया कंपनी रहइबो आ चाइना संगे रे ट्रेड करबा तमे आउ जे आसो समस्त बिजनेस करि परिबो किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी रो एक्सक्लूसिव राइट रहइबो टी ऊपर ट्रेड करबा आ चाइना संगे रे ट्रेड करबा हला किंतु एटा को भी हटै दिया गला केबे ना ई चार्टर एक्ट 1833 परीक्षा रो आईएएस रे लास्ट ईयर पढितला जे कंप्लीटली एबोलिशन ऑफ मोनोपोली ऑफ ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केबे हटै दिया गला इंक्लूडिंग ट्रेड विथ टी एंड चाइना तो एटा केबे 1833 1813 रे कोन हितला ना सेमानकर अन्य कंपनी माने आसीबे मोनोपोली ऑफ ट्रेड हमर हटै थिले किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी रो दीटा ऊपर एक्सक्लूसिव पावर थिला कोन ना चाइना आउ टी ऊपर थिला तेनु एटा को कंप्लीटली एबोलिश कराय गेला केबे 1933 नेक्स्ट हमर को हमें कहूचे जे 1853 रे फर्स्ट टाइम पई लॉ मेकिंग करिया पई हमर गोटे सेपरेट बॉडी क्रिएट करा गला जोटा को हमें कोन कहूचे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हमें कहिया ओके तो सेंटर रे गोटे हमर लॉ मेकिंग करिया पई गवर्नर कर जो आगुरु थिला गवर्नर आउ तांका एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेही माने लॉ तयारी करथिले सेही माने ही हमर डिसीजन होतले सब तो ये कहले नाही नाही गवर्नर आउ तांका एग्जीक्यूटिव काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन काम करिवे लॉ में करिया पे हमें गोटे सेपरेट बॉडी क्रिएट करिबा तेनु आम भारत रो पार्लियामेंट रो मूल दुआ पडिला केबे ना ए चार्टर एक्ट 1833 जो हमें कहूचे हम इंडिया रे लॉ करिया पे जो लोकसभा राज्यसभा अछि दीडा हाउस अछि ना ने सिमिलरली 1853 रे कहले जे जो मिनिस्टर माने रहिले गवर्नर रहिले तांको काम से एडमिनिस्ट्रेशन करंतु किंतु जो लॉ गुडा का आसीबो ता पे गोटे सेपरेट बॉडी रही तो सेटा हमें कहूचे सेंट्रल हमर लेजिस्लेटिव काउंसिल जोतिरे हमर सेपरेट 6 जण मेंबर हमर जो माने कि लॉ हमर तयारी करबो सो चार्टर एक्ट 1853 रे सेपरेट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल ता माने लॉ तयारी करिया पई गोटे बॉडी रहिला आउ ए एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन पई गवर्नर आउ तांका एग्जीक्यूटिव काउंसिल ओके फर्स्ट टाइम पई हमर एटा सेपरेट करा जायतला जोटा कि हमें परे देखिबा धीरे धीरे सेथे नंबर बढ़िबे 60 जो 16 हेबे 60 हेबे आज का डेट रे 543 जो लोकसभा और राज्यसभा रे देखुछ तार मूल दुआ ए 1853 ने हमर पड़ ओके एंड 1853 ने आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा हिथिबो
इंडियन मानकू सिविल सर्विस रे बसिया पे अलाउ करे इट इज ओपन फॉर हमर कहा कर दिबो ना इंडियन मानक पई ओपन कर दिया जिवो ई चार्टर एक्ट 1853 अनुसार इंडियन माने सिविल सर्विस रे बसी परिबे एंड जो फर्स्ट इंडियन जे सिविल सर्विस क्वालिफाई करिवे से होछन कि सत्येंद्रनाथ टैगोर टैगोर एसएन टैगोर हमें कहचे ओके रविन्द्रनाथ टैगोर कर भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर होछन फर्स्ट इंडियन जे के सिविल सर्विस हमर क्वालिफाई करे तो जेतले ई चार्टर एक्ट 1853 रे इंडियन मानक को अलाउ करा जिवो कोन हमरो परीक्षा दबा पे okay preamble upare question padithla with reference to preamble to the constitution of india consider the following it is mentioned the date of adoption of the constitution it was enacted by a constitutional assembly before the constitution was enacted it is a neither source of power nor a prohibition upon the legislature कोडा हमर आ भितर ठीक अछि yes तार date of adoption preamble हमर मेंशन अछि हमें कहले केबे 26 नवंबर 1949 जोडा को हमें कहउचे कॉन्स्टिट्यूशन डे बोली कहउचे डेट ऑफ एडॉप्शन 26 नवंबर 1949 ओके संविधान दिवस और कॉन्स्टिट्यूशन डे बोली हमें कहउचे ओके एइथिरे हमें एटा कोन कहले जे हमर प्रिएम्बल टा होची गोटे समरी एसेंस और तो हमें कहबा जे इंट्रोडक्टरी टू द हमर संविधान संविधान भितरे कोन अछि ता समरीटा लिखा है एथिरे हमर जे हमें कहू जे को भलिया इंडिया ना हमें गोटे सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बोली हमें कहू ओके तो को भलिया इंडिया हला आर ऑब्जेक्टिव कोन ना लोक माने को हमर जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी ऑफ फ्रैटर्निटी प्रोवाइड करिवो ओके एंड डेट ऑफ एडॉप्शन एथिरे अछि सो डेट ऑफ एडॉप्शन किंतु हमें जेमति संविधान ने हमर पावर अछि तमर फंडामेंटल राइट रे लिखा है जे तमरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अछि जदी सेटा वायोलेशन होछि तमे सुप्रीम कोर्ट को जाउछ किंतु एई जो प्रिएम्बल हेमिति किछि पावर हमको दउनी ओके प्रिएम्बल ता खाली अछि कोन भाई जे संविधान में कोन अछि तार प्रीफेस सेटा पेज समरी पेज सेटा सो इट इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर टू लेजिस्लेचर एटा हमर ठीक अछि तो एबे मते को जे कोडा हमर आंसर कोन हबो okay okay see amara it is enacted by the constitution before the constitution is enacted na constitution ta ko hame kebe enactment kale हमें रिपब्लिक डे हिसाबरे 1950 रिपब्लिक डे 26 हमें जनवरी 1950 को एनैक्टमेंट है it is enacted by constitution assembly before the constitution is enacted okay तो हमर कोन अछि ना एडा ठीक अछि ओके सो आंसर कोन हे जबार 1 and 3 1 and 3 so second भूल कोन भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आस्था वेरी गुड ओके यस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एटा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे हमर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आस्था ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन रहला Consider the following statement with reference to cultural and educational rights provided in the Constitution of India. It provides the right to conservation of language and cultural only to minorities. Under Article 30, only minorities have the right to establish educational institution of their choice. both sir Okay. How ke kon कहउछ both learning गीतांजलि सी okay both sir both C 1 and 2 तो C बोथ हवा 2 okay C both 2 only okay
हमर आंसर बी हबा करेक्ट आंसर ओनली 2 हे जिवो करेक्ट आंसर ओके तेनो फास्ट हमर जो कहू छे जे हमर माइनॉरिटीज जो हमर रहू छी तो एटा केवल लैंग्वेज को न रिलीजन को भी रहू तो हमें कहले जे केवल प्रोवाइड राइट टू कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर इवन इफ रिलीजियस माइनॉरिटीज कथा हमें कहू छे तो एटा हमें फास्ट भूल माइनॉरिटीज माने कोन ना रिलीजियन माइनॉरिटी भी हे परिबो जो माने हिंदू हेले हिंदू को मुसलमान हेले क्रिश्चियन हेले सिख से माने हेले तो सेटा अंडर आर्टिकल 30 रे ओनली माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस इटा हमरो ठीक अछि सो ओनली 2 हे जो हमर करेक्ट आंसर ओके 95 और 5टा क्वेश्चन अछि फटाफट करो पुनी हमें करंट अफेयर्स क्लास करियर अछि ओके द टर्म सोवरेन सोशलिस्ट added in 42nd Amendment Act. Being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of foreign state. Indian socialism involves the nationalism of all means of production and distribution. तो एथिरे फास्ट आप भूल अछि ना ठीक अछि रॉन्ग भूल अछि 42nd Amendment Act 1966 में only 2 होबे सोशलिस्ट सेकुलर आ इंटीग्रिटी अछि इंटीग्रिटी नथिला ओके तण सेति पय भूल सोशलिस्ट का ऐड कराइतला सेकुलर ऐड कराइतला इंटीग्रिटी ऐड कराइतला त एटा भूल अछि बीइंग ए सोवरेन कंट्री इंडिया कैन आइदर एक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी और सीड ए पार्ट ऑफ इट टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट यस काहे कि इंडिया जो चाहिले गोटे कोन करि परिबो ना गोटे फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करि परिबो और किछि निजर किछि पार्ट दे परिबो जोटा कि हमर 100 अमेंडमेंट एक्ट रे हिछि 100 अमेंडमेंट एक्ट का कोन की कहि परिबो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इंडिया बांग्लादेश भीतर कोन हिछि ना इंडिया किछि पार्ट निजर बांग्लादेश को देछि बांग्लादेश रो किछि पार्ट निजे को आछि हमें सोवरेन माने कोन कहू छे ना टोटली इंडिपेंडेंट जहां भी डिसीजन नबा इंडिपेंडेंटली डिसीजन नबा नो अथॉरिटी अबव अस वी आर द सुप्रीम पावर वी आर द बॉस ऑफ आवर सेल्फ जहां भी डिसीजन नबा इंटरनल हो एक्सटर्नल हो निजे हमें डिसीजन नै परिबा फॉर एग्जांपल हमें बे कहले जेमति कि इंडिया पाकिस्तान रो वार हमें कहू छे जे डिस्टर्बेंस चली छे और वार लाइक सिचुएशन हेई छी तो सेथिरे जेतले सीजफायर कथा कोआ होची एथिरे हमें डोनाल्ड ट्रम्प कहले जे मु करि देले ओके तेनो हमरो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कोन कहले जे इंडिया पाकिस्तान भितरे जे कोनोसी प्रॉब्लम हबो सेटा बायलैटरल टॉक रे ही सॉल्व हबो देयर इज नो थर्ड पर्सन जे के इथरे इन्वॉल्व हबो तेनो हमें कहले हमें डिसीजन दे कोन करिवो हमें दिजन डिसाइड करिवो इथरे थर्ड पर्सन जोथरे कि डोनाल्ड ट्रम्प पूनी काली थरे आउ थरे ट्वीट करछिन जे नै मु जोटा कहि दिली सेटा मु कहली मु ट्राई करछि मु करि देनी बोली कहछि आगे कहले त मु करि देछि जे सीज फायर करिया कथा मु ही करिछि तापर कहले नै मु करिन मु ट्राई करूछि करिया पे आउ थरे ओटे ट्वीट कले तो एथिरे कहले जे आमे जहा डिसीजन नबा सोल सुप्रीम अथॉरिटी आम पाखे रहइबा हमर इंटरनल मैटर हो और एक्सटर्नल मैटर हो एथिरे कोनोसी एक्सटर्नल हर कंट्रोल रहिबो कहार कंट्रोल हमर रहइबो नहीं तो एडा होची हमें कहले टोटली इंडिपेंडेंट कंट्री बोली हमें कहछे सोवरेन कंट्री हमें चाहिल हम पार्ट रो किछि देई परिबा अलगा को कंट्री किछि पार्ट नै परिबा जोटा को हमें कहछे इंडिया बांग्लादेश भीतर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हेची 100 जो अमेंडमेंट एक्ट रे किछि पार्ट इंडिया बांग्लादेश को देछि बांग्लादेश रे किछि पार्ट हमर आनछे जेमिति कि हमें गोवा को कैप्चर कले गोवा को 1961 रे कैप्चर कले इंडिया इंडिपेंडेंट हबार तमे भाबो 14 वर्ष पर जाई कि हमर गोवा हम इंडिया रे मिसिला ओके तो ए बडा तमे कहि परबो सो फास्ट जो थिरे अछि भूल सॉरी जोडा फास्ट अछि तमे सोडा को भूल छक पके दियो ओनली 2 ओनली 3 तो आंसर कोन हे जिवो ओनली 2 हे जिवो हमर करेक्ट आंसर ओके सो इंडियन सोशलिज्म हमें कहू जे हमें जो सोशलिस्टिक कंट्री कहू जे सोशलिस्टिक रा हमर कोन द मीनिंग कोन ना हमर मिक्स टाइप रा इकोनॉमी both private sector and public sector exist side by side तो हमर एठी public sector like ONGC NTPC हमर स्टील प्लांट राउरकेला स्टील प्लांट एडा public sector रहला private sector like हमर रिलायंस रहला और अडानी ग्रुप रहला तो both हमर जो इकोनॉमी रहला तो सेटा प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर exist side by side नाही कि पूरा सब कंट्रोल करूची गवर्नमेंट
एठी इंडियन सोशलिज्म में नेशनलिज्म नथिला जे सब गुडा को गवर्नमेंट कंट्रोल करूची जेमति कि आगु रशिया रे थिला सब सोशलिज्म माने कोन सब गवर्नमेंट कंट्रोल रहइबो आउ सी समस्त भाबरे इक्वल भाबरे बांटिबो हमर इंडिया रे सेही भलिया नुहे हमर प्राइवेट सेक्टर भी अछि पब्लिक सेक्टर भी अछि साइड बाय साइड सब गवर्नमेंट कंट्रोल करू ओके तो हमर इंडिया रे सोशलिज्म not controlling all तेनो एठी प्राइवेट सेक्टर मान को भी चांसेस दिया जाय छै ओके so article 19 which of the following right is or are guaranteed by article 19 of Indian constitution right to declare a lockout voice सुबुची मोरो Yes, sir. yes sir Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन तमे करो कोडा हमर ठीक अछि अभी तुम ता कोडा हमर आर्टिकल 19 रे अछि right to declare a lockout right to right of outsider to reside and settle in a tribal area right against the imposition of the pre-censorship on a newspaper See. See, sir. Freedom of speech. okay lockout or strike ता हमर गोटे फंडामेंटल राइट नुहे ओके गोटे आउटसाइडर जाई कि ट्राइबल एरिया रे सेटल और डिसाइड हे पारे जोडा रेस्ट्रिक्टेड एरिया सेहि दिरा हमर हेई परिबो नाही ओके तो हमर कोन ना आंसर होची हमर Only three only. ओनली थ्री है जी ओके with reference to fundamental duty they are non justiciable in nature and have no legal sanction against their violation the enjoyment of fundamental right is conditional upon the fulfillment of this duty only one sir One only. ओके तो हमर एटा कोन हमें कहितले फंडामेंटल ड्यूटी टा होची नॉन जस्टिसेबल जेंति फंडामेंटल राइट टा जस्टिसेबल एटा होची हमर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर ओके नेक्स्ट होची कोन ना द एन्जॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज कंडीशनल अपन फुलफिल नो हमें जदी कुआ दिबो जे नाही तमे जदी ड्यूटी फुलफिल करिवो ता पर तमे राइट एन्जॉय करिवो नो फंडामेंटल राइट तुमको इनहेरेंट दिया जाय ओके तो सेइडा केही वायोलेशन करि परिबे ना एया नुहे कि नहीं तमे फंडामेंटल जदी तमे ड्यूटी ठीक रे करू ना तमर राइट्स रहइबन सेया ओके तो हमर कोन होची ना ओनली ए इज द करेक्ट आंसर हमर है ओके नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ए लॉ implementing any of the DPSP cannot be declared void on the ground contravention to the fundamental right to equality before law all the law giving effect to DPSP are placed in the 9th schedule and are outside of the preview of judicial review kon hobo kon hobo answer aro ओके डी किरण स्मृति प्रभा कल्याणी एंके डी कोचन समस्त नाइदर तेनु तमे कोच नाइदर हमर आंसर 98 ओके 98 हो जे हमर डी ओके नाइदर एटा हमर ठीक अछि आपने कहले जे a law implementing any of the DPSP cannot be declared void on the ground contravention to the fundamental right equality before law okay एटा void हेई परिबो जदि जोटी हमें कहले गोटे लॉ जोटा कि हमर फंडामेंटल राइट को वायोलेशन करूचे ताको हमें void करि परिबो ओके तापरे हमें कहले all the law giving DPSP are placed in 9th schedule are no जो गुडा हमें 9th schedule रखिबा एटा भी क्वेश्चन पडितला जे जो गुडा 9th schedule रखा जाय सेटा माने ताकू जुडिशियल रिव्यू करी हबो नाही तो एटा हमर कोन जो स्टेटमेंट आटा रॉन्ग काहे कि ना जो आईआर केलो को केस आसीबो सेहिथिरे हमर कुहा जिवो जे 24 अप्रैल 1973 परठू जो गुडा हमर 9th schedule रहिबो सेगुडा को हमर जुडिशियल रिव्यू हे पारे ओके जे सब गुडा का नुहे तार जोडा दुई माने 1973 अप्रैल 24 तारिख पर जो हमें कहूचे केशवानंद भारती केस पूर्वरु जोडा हे जाई ता परे जोडा का तमे रखिबो 9th schedule ले सेउडा का जुडिशियल रिव्यू हेई परिबनी सेटा न सेउडा का जुडिशियल रिव्यू हेई परिबो सो हमर डी टा हमर होची नाइदर 1 और 2 हमर
So next question, which of the following include in directive principle of state policy? तो एटा हमर कोन D. ना Equal level equal work. both men and women एटा हमर DPSP रे अछि हमें देखिथिले protection in respect to conviction of offense हमर एटा article 20 जोटा कि fundamental right रे अछि okay right to life personal liberty and right to privacy एटा होछि 21 protect the interest of minority हमर केते रे अछि 29. हां 29 okay 29. तो एटा हमर equal pay for equal work for both men and women एटा केते रे अछि 39 D. okay 39 sub clause D रे अछि okay so एटा हमर DPSP रे अछि equal pay for equal work for both men and women तो हमर जो एज लिमिट थिला अगरु वोट दबार एज लिमिट हमर केते थिला 21 वर्ष एटा को केबे हमें 61 Amendment Act. ओके एटा केबे 61 first amendment. 1980. 1989 ओके राजीव गांधी का समय रे ओके मन रखिबो राजीव गांधी का समय रे ओके तो जो वोटिंग रो एज ता हमर थिला 30 वर्ष थिला सॉरी 21 वर्ष थिला सेटा को हमर रिड्यूस करा गला 18 वर्ष एबे हमें कहले 18 वर्ष रु ऊर्ध्व जो माने तांकर वोटर लिस्ट ना अछि से माने वोट दे परिबे एटा चेंजेस करा हेतला 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989 ओके तो आंसर कोन हे जबा हमर सी इज द करेक्ट आंसर ओके सो ठीक अछि हमें नेक्स्ट क्लास रे मॉक टेस्ट 2 रु करबा एंड मॉक टेस्ट 2 हमर जो माने नुवा हमें एबे नुवा जॉइन करू छथि तो मॉक टेस्ट 2 रु से माने देई परिबे एंड मु अपडेटेड शेड्यूल टा भी देबी एबे वीकली दीदीटा टेस्ट करा जी ओके जो माने फास्ट दउ छी दुईटा लाखे जो माने आगु दउ छी माने गोटे गोटे तांकर जो माने 13 नंबर देलेनी 14 नंबर देले तापर तांकु गोटे गोटे किंतु जो माने हमें एबे दीदीटा टेस्ट कर चलिए ओके ओके ठीक अछि हमें 10 मिनिट्स ब्रेक नबा सर तापरे गोटे क्वेश्चन थिला सर 7:15 बेले को आउथरे हमें करंट अफेयर्स क्लास रे होते हां को सर सर ए प्री पई सर करंट अफेयर रो कोन करबो सर टिके बुझी हमें करिबा करंट अफेयर्स रो हमें कहू छ ना से क्लास से पे हमें करू छे जो जोडा इंपोर्टेंट हम करंट अफेयर्स सेडा करिबा एंड फाइनली आउ 5 खंडे करंट अफेयर्स रो एमसीक्यू दिया जिवो सेति कि तमे पढिबो बच्चा बच्चा करंट अफेयर्स जोडा इंपोर्टेंट अछि ताको एमसीक्यू फॉर्मेट रे डिस्कशन कर ओके हां ठीक अछि थैंक यू एवरीवन सो सेम लिंक रे जॉइन करिवो सो 7:15 we will again meet थैंक यू सर